Welcome students. So in this class we will discuss about changes and reaction, and this video is for class 7 students. So it's first class and first chapter of chemistry, that is changes and reaction. So basically in this chapter we will discuss about a different type of change. In class 6 already we discussed about changes as and classified changes as three broad categories, which are physical change, chemical change, and also nuclear change. So in this class we will discuss about physical change, where no new substances are formed, only state of matter will change, and it can be reversed by reversing the condition. So these changes are termed as physical change. And in physical change, basically there is no change in molecular arrangement of a compound. So if molecular arrangement of a compound gets changed, then it must be a type of chemical change. So अगर कहीं पर भी अगर molecular arrangement अगर compounds का अगर बदल रहा है तो वो हमारा chemical change है. But अगर only state अगर बदल रहा है, उनके molecular arrangements में अगर कोई changing नहीं हो रहा है तो वो physical change होगा आपका. Generally, sublimation, freezing, melting, condensation, vaporization, evaporation, all of these are physical changes. In sublimation, what happened? So in sublimation, basically one solid converted into their vapor form or gaseous form by heating, or it can reverse from gas to solid. So if a material on heating directly converted into gas, one solid material directly converted into gas, or one gas after condensation it converted into solid, then this one is known as sublimation, and such materials or substances are known as sublimates, like ammonium chloride, dry CO2, naphthalene ball. All of these are sublimates because when we heated it, then it directly converted into their vapor form, and when we condense, then their gases or vapor directly converted into solid without attaining liquid phase. Because in class 6 already we discussed about when we heated a solid, then it converted into liquid, and a liquid converted into vapor by heating. But if we cool down, then the gas or vapor condense and form liquid, and when we cool down the liquid, then liquid converted into solid. But in case of sublimation, a material do not exist as liquid phase. So क्या ये सही है कहना कि वो लिक्विड फेज में आता ही नहीं है? तो एक्चुअली ऐसा है नहीं. वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, बट उनका टाइम पीरियड जो होता है उस लिक्विड स्टेट के लिए वो इतना छोटा है कि वी कांट आइडेंटिफाई विद हेल्प ऑफ नेकेड आइज, कि वो उस लिक्विड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने नेकेड आइज के हेल्प से, क्योंकि वैसे मटेरियल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं उसी टेम्परेचर पर वो वेपोराइज हो जाते हैं. तो उनको हम लोग सब्लिमेशन, यानी प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन एंड द मटेरियल इज नॉन एज सब्लिमेट. नाउ द फ्रीजिंग इज also one physical change, where one liquid by losing heat energy, it means by cooling, converted into their solid form. So when one liquid converted into solid by cooling, then this one is known as freezing. So ये जो phenomenon है वो हमारा freezing है, and जिस particular temperature पे कोई भी मटेरियल फ्रीज होना शुरू होता है, वो कंप्लीटली अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. सो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वन लिक्विड सब्सटेंस स्टार्टेड टू फ्रीज एंड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू देयर सॉलिड फॉर्म. सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट, and the whole phenomenon is known as freezing. Similarly, melting is also one physical change, where one solid converted into liquid
by heating. So when we heated a solid, then it converted into liquid, and the process is known as melting. And the temperature at which once a solid substance started to melt and completely converted into the liquid form is known as melting point. So that temperature, particular temperature, is known as melting point, and the whole phenomenon or process is known as melting process. So in melting process, basically one solid converted into liquid by heating. And melting point is a minimum temperature. Melting point is a minimum temperature. So how can you define melting point? So melting point is the minimum temperature at which any solid substance started to melt and completely converted into the liquid form. But during this changing, there is no change in molecular arrangement of the substances. So इनके molecular arrangement, intermolecular arrangement में कोई बदलाव नहीं होता है. यानी जो molecule chemical formula आप बोल सकते हैं शॉर्ट में कि सर during these changes there is no change in chemical formula of the substance. तो yes, this one is right. कि जब भी इस तरह के कोई भी change होंगे तो chemical formula of the substance will not change. Only change their state, मतलब से size, ये सारा चीज चेंज होगा. उनके molecular arrangements नहीं चेंज होंगे because these are type of physical change. So in melting, one solid converted into liquid. Now in condensation condense होगा. So gas or vapor condense by losing energy and converted into a liquid form. So वो क्या करेंगे? गैस होंगे और वो कंडेंस होंगे. कंडेंस हो करके वो लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे by losing energy. It means कि by cooling. So if we cool either gas or vapor, then it converted into their liquid form, and this phenomenon is known as condensation. So during condensation, we must have to material cool down. So आपको अगर कंडेंसेशन अगर करना है तो उस गैस को आप कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, जैसा कि क्लाउड के साथ होता है. सन के हीट के कारण जो अर्थ के जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनसे वाटर इवेपोरेट होता है एंड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में चला जाता है जहां पर कि वो कूल डाउन होता है, ठंडा होता है. एंड ड्यू टू कंडेंसेशन अगेन वो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं जो रेन के फॉर्म में वापस आते हैं. सो दिस वन इज नॉन एज कंडेंसेशन. सो ड्यूरिंग कंडेंसेशन gases condense and form a liquid substance. But during this change also there is no change in molecular formula of the substance. अब है कि मैं यहाँ पे कई बार गैस बोलता हूँ और कई बार मैं वेपर बोलता हूँ. तो एक्चुअली गैस और वेपर दोनों ही इसी स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, गैसेस स्टेट को. बट गैस आप यूज वैसे मटेरियल के लिए करते हो जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जिनका स्टेट अगर गैस का है तो वो अगर अपने गैसियस फॉर्म में है तो वो गैस कही जाएंगी. बट वैसे मटेरियल जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में है या फिर किसी अदर फॉर्म में सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में है, बट ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी वो कुछ टाइम के लिए वो गैसियस फॉर्म में अगर आया है तो वो वेपर है. जैसे वाटर का वेपर होता है, अल्कोहल का वेपर होगा, बट CO2 का वेपर नहीं होगा, वो गैस होगा. बिकॉज कि CO2 हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर वो गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होता है. वैसे ही मीथेन वो गैस होगा, वो वेपर नहीं होगा. सो वेपर हम वैसे मटेरियल के लिए यूज करते हैं जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उनका स्टेट लिक्विड है, बट एनर्जी देने के बाद, हीट एनर्जी देने के बाद वो गैसियस फॉर्म को अटेन करती है तो वो वेपर है. बट अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर से अगर वो गैस के फॉर्म में है और उनका स्टेट अगर गैस है तो उनको अगर आप लिक्विड में भी कन्वर्ट करेंगे कूल करके, ठंडा करके, और आप फिर से अगर उनको गर्म करके अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गैस कहलाएगा, उसको आप वेपर नहीं बोलेंगे यहाँ पे. सो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन. तो ये दोनों ही वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, इन बोथ ऑफ दिस कंडीशंस और बोथ ऑफ दिस are just reverse of condensation. Because in condensation, one gas condensed and form a liquid, attain liquid state. But in vaporization and evaporation, liquid converted into
गैस और वेपर। और सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, सो यहाँ पे माइनस डेल्टा इट मींस आप यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं, कूल डाउन आप कर रहे हैं। डेल्टा इट मींस कि आप यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई दे रहे हैं बाहर से। तो आप अगर लिक्विड है और आप अगर उसमें एनर्जी का सप्लाई दिया, तो वो लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे वेपर और गैस में कन्वर्ट होगा। एंड दिस वन इज वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। So there is little bit difference between vaporization and evaporation. So evaporation take place at any temperature below boiling point and vaporization take place at boiling point. So this one is the difference between evaporation and vaporization, because in both of these conditions liquid converted into their gas or vapor, but evaporation takes place at any temperature below boiling point and vaporization take place only at boiling point. So when one liquid material start boiling and converted into their vapor form, then that phenomenon or process is known as vaporization. But if liquid material converted into their vapor form below boiling point without boiling, then such process is known as evaporation. Like in plant, in our body, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इवेपोरेट होके बाहर निकलती है, सो दीज आर पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। बट वेपोराइजेशन लाइक आपने अगर वाटर लिया है और आप उसको अगर हाई टेम्परेचर फ्लेम पे आप उसको गर्म करें एंड बॉयल होना शुरू हो जाए एंड आफ्टर बॉयलिंग जो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर भी तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, बट वो हमारा कहलाएगा वेपोराइजेशन। सो वेपोराइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन टेक प्लेस below boiling point. So in these two, always the liquid converted into vapor, and that temperature is known as boiling. अब है कि boiling point को आप कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एक और भी टर्म में लेके आता हूँ, boiling point. Just think about some materials like water. So if we heated water up to 10 degree, 20 degree, 30 degree, so जो भी आप इस टेम्परेचर पे वाटर को आप गर्म करेंगे बिलो 100 डिग्री, तो उन सारे ही टेम्परेचर पे आपका लिक्विड वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो सारा का सारा इवेपोरेशन कहलाएगा। बट जब आप बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री पे आप गर्म करेंगे और वो वाटर बॉयल होना शुरू होगा, उसके बाद जो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो कहलाएगा हमारा वेपोराइजेशन, बिकॉज इट टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन टेक प्लेस below boiling point. So what is boiling point? Actually, boiling point is the minimum temperature, that is minimum temperature at which any liquid substance started to boil and completely converted into their vapor form is known as boiling point. So boiling point is a minimum temperature at which any liquid substance started to boil and converted into their liquid form. वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म, देन सच वो जो फिक्स्ड टेम्परेचर है वो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट पर आपका जो है लिक्विड वो ऑलवेज वेपर में कन्वर्ट होगा एंड द प्रोसेस इज नॉन एज वेपोराइजेशन इफ इट टेक्स एट इट्स हैपन एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इफ इट इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट देन दिस वन इज इवेपोरेशन। सम केमिकल चेंजेस लाइक अभी हमने प्रीवियस जो भी चेंजेस हम लोगों ने देखा, सो ऑल ऑफ दिस आर फिजिकल चेंज एंड अब इसी में इस केमिकल चेंज की अगर आप बात करें तो इन केमिकल चेंज ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो ड्यूरिंग केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड न्यू प्रोडक्ट इट मींस देयर मस्ट बी ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रीवियस केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ऑलवेज इनमें एक केमिकल चेंज होगा और जो भी मटेरियल अगला बनेगा उनके बीच उनके केमिकल नेचर्स कंप्लीटली शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एनी टाइप ऑफ फ्यूल। सो नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन्स बट एनी काइंड ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्यूल। सो अगर कोई भी अगर फ्यूल आप जलाते हैं तो वो जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एंड वहाँ पे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं एंड हीट एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट
take a piece of coke or coal in a little supply of oxygen, then it forms carbon monoxide and release some energy. Because here amount of oxygen is very small or a little amount. But if we supply a large amount of oxygen gas, sorry, not heat energy, but supply of oxygen gas. So अगर कार्बन को excess supply of oxygen अगर आप burn करते हैं, then it will form carbon dioxide. So when we supply little amount of oxygen, then carbon combusts and form carbon monoxide, and when we supply an excess supply of oxygen with carbon, then it forms carbon dioxide by combustion. So वो जलेगा और एक new product that is either carbon monoxide or carbon dioxide are formed. So it must be a type of chemical change because there is a change in chemical molecular structure of the product, and the molecular or atomic structure of reactant and products are completely different from each other. Because in reactant side it is only carbon, but in product side it will form either carbon monoxide or carbon dioxide, and these two are completely different from individual carbon and also individual oxygen. So ये दोनों से completely differ करते हैं. So these are a new product. Another example, that is methane, CH4, CNG में मिलता है आपको, compressed natural gas, that is methane, also known as methane, or Mars gas. When it combusts in the presence of oxygen, then it will form carbon dioxide, water vapor, and also release some amount of heat energy. Energy in the form of heat. So this gas is used as fuel because it forms heat energy, release heat energy by combustion. When it combusts, then it forms a new products which are completely different from their parent form. So this one is also a type of chemical change because in this change new products are formed, and also it cannot be reversed by reversing the condition only. Because कि in previous changes like जो भी हमने physical change हम लोगों ने study किया है, sublimation, evaporation, condensation, so all of जितने भी वो physical changes थे, all can be reversed by reversing the conditions. All can be reversed by reversing the conditions only. So आप अगर गर्म करके कोई A to B आप convert करें तो ठंडा करेंगे तो B to A हो जाएगा. कहीं पर भी अगर आप A to B अगर ठंडा करके अगर आप A to B को ऑप्टेन कर रहे हो तो B को आप गर्म कर दोगे तो फिर से आपको A मिल जाएगा. So it's a type of physical change because it can be easily reversed by reversing the condition only. But in these changes it is not possible that it reversed by reversing the conditions. So आप यहाँ पे possible ही नहीं है कि आप इनको reverse कर दें only by reversing the condition because in these changes new products are formed. And it is a type of chemical change. Another example, that is butane. All of you know that C4H10, that is a mixture of N-butane and isobutane. Found in LPG, liquefied petroleum gas, domestic purpose के लिए आप यूज करते हैं energy production, domestic level पे. When it combusts in the presence of oxygen, because we know that for combustion oxygen is essential substance or essential material. Without oxygen nothing can be combust. आप कुछ भी अगर combust करना है तो उसके लिए oxygen available होना जरूरी है because कि oxygen के ही presence में कोई चीज combust होता है except some other metals हैं जो कि नाइट्रोजन वगैरह के सिस्टम के अंदर उनको जलाया जा सकता है. जैसे मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप नाइट्रोजन में जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है. सो एक्सेप्ट सम एग्जांपल्स, अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें तो जनरली जो भी कंबशन होगा वो ऑलवेज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन से ही उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और वो कंबस्ट होता है. तो इन दिस रिएक्शन आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड आल्सो हीट एनर्जी रिलीज्ड. सो दिस वन इज आल्सो अ टाइप ऑफ chemical change because in this change also new products are formed. Similarly,
iron, all of you know that about rusting. So rusting it is what because iron material exposed in a different atmospheric condition, then a layer of iron oxide is deposited over the surface of iron. And this phenomenon of oxide formation of iron is known as rusting. And ये चीज अगर किसी भी मेटल के लिए अगर होता है तो उसको आप corrosion आप बोलते हैं. But in case of iron it is known as rusting because these oxides left the surface of metal in the form of either dust or rust. So in case of iron it is known as rusting, but in case of other materials or other metals it is known as corrosion. Iron basically exposed in presence of oxygen and also moisture form a molecule of rust whose chemical formula is Fe2O3.XH2O, where XH2O represents number of water molecules attached with iron oxide, and this is the chemical formula of rust. So you can easily observe here the change in chemical nature of the substance, because here iron is indivisible, that is Fe, O2 is in the form of gas, and H2O in the form of vapor. But when these three combine together, chemically form a new product, that is Fe2O3.XH2O, which is completely different from iron, also different from oxygen, and also different from water. So this one is a type of chemical change, and also it cannot be reversed by reversing the condition only. Yes, we know that it can be reversed, but not reversed by reversing the condition. We must have to follow another way, which is known as metallurgy. By this process, जो metallic complexes होती हैं उनको आप resolve करते हो and again metal को आप reobtain करते हैं, तो वो process metallurgy का होता है. but आप reversing the condition के through यहाँ पर इनको हम reobtain नहीं कर सकते. Now इस topic से question आता है कि how can you explain that oxygen and moisture both are essential conditions for rusting. So for solving this problem, we must have to play one activity. In this activity, we will use three different test tubes labeled as A, B and C. पॉसिबल नहीं होगा, और इसके अंदर अब आप एक आयरन नेल आप छोड़ दो, अंदर डालिए आयरन, और ऊपर से एक कैप लगा देना है और पैक कर देना है. अंदर में बॉयल वाटर है, सो इन बॉयल वाटर देयर इज नो ऑक्सीजन एंड वी यूज सम ऑयल ड्रॉप्स. सो ड्यू टू दीज ऑयल ड्रॉप्स तो एयर जो है आपका वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा उस वाटर के अंदर. In second test tube or in B test tube, we will use some pieces of calcium chloride or any other dehydrating agent. Dehydrating agent. So name dehydrating agent. Dehydrating means कि वैसा एजेंट जो कि डिहाइड्रेट करता हो सिस्टम को, वाटर को एब्सॉर्ब करता हो. तो ये जरूरी नहीं कि आप ऑलवेज कैल्शियम क्लोराइड यूज करें, आप कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं, व्हाइट पाउडर, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट. आप इसके जगह पे सिलिका जेल आप यूज कर सकते हैं. मैं एक चीज को रिमाइंड कराना चाहूंगा आप लोगों को, हम लोग कई तरह के इलेक्ट्रिकल
गैजेट्स हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पीटीसी, तो उन सभी में आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का एक पैकेट डाला हुआ रहता है। एक्चुअली वो सिलिका सेल होता है जो उसके अंदर के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं आता है। सो इस तरह के किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करें और उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या होगा कि ये मेरा पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब ड्राई हो जाएगा, यानी इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होगा। अब आप इसके अंदर एक आयरन नेल आप फिट करें तो मॉइस्चर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ O2 है। फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में वाटर भी अवेलेबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी मैंने एक आयरन नेल यूज कर रहा है एंड इसके अंदर कोल्ड वाटर हाफ करना है, आधा कोल्ड वाटर डालना है, ऊपर से खुला करना है। सो आफ्टर 2 days 3 days 4 days आप देखेंगे कि जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है इसमें रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, यहाँ पे आयरन के ऊपर रस्ट आ गया, बट इन दोनों में से किसी में भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, नाइदर इन सेट A nor in set B. So why in set A actually water is present because we use the boiled water, so water is present but oxygen is absent. In second test tube oxygen is absent but हम लोगों ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया, so moisture is absent. But in third test tube both are present. Water is present here in cold form, that is H2O, and also oxygen is present. So in third test tube only जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो not in first test tube nor in second test tube. So with the help of this activity we can show that oxygen and moisture both are essential condition for rusting. In absence of any one of them, rusting is not possible. So rusting कभी भी possible नहीं होगा अगर इस दोनों में से कोई भी एक अगर absent हो, तो वैसे केस में रस्टिंग नहीं होंगे। बट अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो वैसे केस में आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ एंड वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है। इन केस ऑफ आयरन इट इज नॉन एज रस्टिंग, बट इन केस ऑफ अदर मटेरियल्स लाइक कॉपर, तो कॉपर हमारा जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO का फॉर्मेशन करता है, वो कॉपर सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है, CuS का फॉर्मेशन करता है, ये ब्लैक कलर का डिपॉजिट होते हैं। अदर मेटल्स भी एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर एंड Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी कोरेजन है बिकॉज कि ये उस मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है। अब वो प्रोटेक्टिंग लेयर फर्दर कोरेजन को स्टॉप कर देता है, मतलब ऊपर वाले लेयर का कोरेजन, सपोज दिस वन इज पीस ऑफ एल्युमिनियम and by reaction with oxygen it form Al2O3 on their surface. So this Al2O3 act as one protecting layer, so it protects further layer by corrosion, वो corrosion से further layer को बचाता है। तो यहाँ पर ये corrosion है क्योंकि ये अब formed compounds जो भी हैं ये उस surface को छोड़ के बाहर नहीं हटते हैं, but in case of rusting जो ये compound बनता है ये dust के form में बाहर निकल जाता है, तो further layer फिर उनका corrosion होता है। तो अगर कभी ऐसा हो किसी मेटल पे कि फर्दर लेयर का अगर कोरोजन अगर होना शुरू हो तो वो हमारा रस्टिंग है, जैसा आयरन के केस में होता है। बट इन केस ऑफ अदर मेटल इट इज नॉन एज कोरोजन, इनको आप कोरोजन बोलते हैं, जहां पर एक मेटल डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ एक्सपोज्ड होता है एंड वो अपने सरफेस के ऊपर कुछ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का। एल्यूमिनियम इज स्टिल वन रिएक्टिव मेटल बट हम उसका यूज फूड यूटेंसिल्स में करते हैं। इसका मेन कारण क्या है? Al2O3 इनएक्टिव होता है। ये आपका जो कंपाउंड है एल्युमिनियम तो रिएक्टिव होता है बट Al2O3 जो है वो प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये इनएक्टिव होता है कई मटेरियल्स के साथ, जिसके कारण वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी बनाता है और वो फर्दर रिएक्ट भी नहीं करता है।